A very good morning, all my dear students. I am Pallavi Dole. Welcomes you all in this today's lecture of programming with Python. In the last lecture, we are started with unit number 5, that is the object-oriented programming concept in Python programming language. So let us overlook that key in the previous lecture what we are studied. Okay. So basically, in the previous lecture, we will see the different aspects about the object-oriented programming language, which is basically in use in the Python. These are the OOPS terminologies, that is the class variable, data member, then functions, overloading concept, the instance variable, inheritance, instantiation, method, object, and operator overloading. Then in the previous lecture we already studied the creating the classes, how the classes will be created in case of Python programming language. So basically class keyword is used, that is class name colon, and then the class what is there. Okay, and then you have to just create and in that you will add the different numbers of functions models basically if you want to use that. Okay, then here the first method, that is the underscore init underscore is special method which is called as a class constructor or initialization method that Python calls when you create a new instance of that class. So basically this is used for the initialization purpose, so it is a necessary for each and every class definition. Next, creating instance objects, how to create the objects. So basically have to call the constructors here, and then accessing the attributes. So using dot operator you can easily access any members of the class definition. So it is just like a Java and CPP programming. Okay, so in that basically we are using the concept of object oriented programming concept. Okay, so in that also you have to use the dot operator for accessing the number of different members of the class. Next, this is the example we already seen. Now, one more basic concept which is basically used in this Python programming language, basically used in object-oriented programming terminologies. So you can add, remove, or modify the attributes of classes and objects at any time. Okay, so you can add, you can remove or modify the attributes. So this is not possible in case of the CPP and Java, but this is possible in case of the Python programming language. So let us consider the example here. So here emp1 dot age equal to 7 hash add an age attribute. So here the age attribute will be added with the value 7. So it will be added on the given class definition. Then emp dot age equal to 8 hash modify. So here age attribute will be modified here. So previously हमने जो उसमें ऐड किया था उसकी जो वैल्यू थी that is 7 will be initialized, but in case of second statement this will be assigned with a 8, so that will be 7 will be modified to 8. So here modification is also possible. Then del emp1 dot age. So here you can use the del keywords to delete the particular attributes of the class definition. So instead of using the normal statements to access the attributes, you can use the following functions. तो ये जो नॉर्मली हम यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ ना करते हुए बेसिकली पाइथन के अंदर अलग अलग जो फंक्शंस है वो भी डिफाइन किए गए हैं. सो द वेरी फर्स्ट इज़ द गेट attribute, that is get attr. Okay, so get attr in bracket object comma name bracket default to access the attributes of the object. So you have to give the object name and the name of that particular object. So you will use this is basically use these functions which is used to access the members or the attributes of the object. Next one is the has attribute, that is has attr in bracket object comma name to check if an attribute exists or not. If it is not exist, then you can add. Okay, if it is exist, you can modify it. Okay, so these are the number of different operations basically perform on the Python classes with the help of that functions.
Next is the set attribute in bracket object comma name comma value. To set an attribute, if attribute does not exist then it would be created. Okay, so I already discussed this in the previous कि अगर वो exist नहीं है तो उसको exist भी करेगा. Okay, तो उसको create भी कर सकता है. So set attribute method is responsible to create as well as means modification अगर करना है तो वो भी possible है. अगर add करना है तो adding and modification both will be possible with the help of the set attribute method here. So object जो भी है आपका जो name है attribute का और उसकी value that will be created. Okay, if name attribute is not present in that class definition, then first it will be created and then value will be assigned to that particular attribute. So this third method is basically used for adding and modification purpose. Okay, so for both purpose it will be used. Next is the del attribute in bracket object comma name to delete an attribute. So last जो statement हमने ये जो पढ़ा था, this is with the help of that function you will delete your attribute from the class definition. So del attribute, del ATTR in bracket object comma name to delete an attribute. Okay, so see here the example I will given here, one example. C has attribute emp1 comma age. Okay, so return true if age attribute exists. Okay, so has यहाँ पर हमने true false की conditions दी है. So whether it is present or not, so yes it is present, so it will give the true answer here. Okay, next is the get attribute emp1 comma age. Return value of age attribute. So age की जो भी value है that will be written here, whether it is 7 or 8. After modification it will be 8, so it will be written 8. Then set attribute emp1 comma 8. So यहाँ पर सबसे पहले 7 था तो 7 यहाँ पे रिटर्न हो गया. आपको अगर अपडेट करना है so set attribute age at 8. तो ये जो age है attribute अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके क्लास डेफिनेशन के अंदर तो उसको मॉडिफाइड करेगा विथ वैल्यू 8 here. But if it is not present, then first it is created and then 8 will be assigned to that age. Okay, age attribute. So this is the purpose of the set attribute method here. Next is the del attribute. So emp1 comma age, that will be delete the attribute from the class definition. So these are all the built-in functions present in the Python programming language to deal with the or to access or present or interaction with the members of the or attributes of the class definition. Next is the built-in class attributes. So these are the different built-in class attributes present in Python. So every Python class keeps following built-in attributes and they can be accessed using dot operator like any other attribute. So it will be started with the underscore and end with the underscore. So dict, so dictionary containing the class namespace. Okay, then doc, class documentation string or none if undefined. Then name, class name. Then next one is the module. So module name in which the class is defined. This attribute is a main in interactive mode. And the last one is the bases, a possibly empty tuple containing the base classes in order of their occurrence in the base class list. Okay, so you just remember this all built-in class attributes. These are very important as per the examinations point of view. Okay, so see, this is the example regarding this built-in class attributes. So here I will design one class employee, common base class for all employees. Okay, next emp count equal to 0 here. So I will initialize with equal to 0. So basically जब तक आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं होंगे तब तक ये 0 रहेगा और जैसे ही आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करना शुरू करोगे एम्प्लॉय क्लास के वैसे वैसे आपका जो emp काउंट है दैट विल बी इंक्रीज बाय 111. Okay, next def init. So this init method is used for initialization purpose, that is called as the instantiation also. Okay, so self is a keyword, common, name and salary. So self dot name equal to name and self dot salary equal to salary.
So here dot operator is basically used to access the members. So here name and salary is the members of class definition. Okay, and with the help of that self you will initialize the whatever the parameter pass whenever these functions or initializations will be done. So name will be given to that class variable. Next is the employee.emp count plus equal to 1. So whenever the object is created, automatically the constructor or init method will be called here. Okay, so every time whenever the object is called, that emp count value will be increased by 1. Next, def display count self print total employees percent d percent employee.emp count. Then def display employee self print name self dot name and salary self dot salary here. Then here see here the different 5 statement which is basically use the inbuilt class attributes. So print employee doc employee dot अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर, तो हर एम्प्लॉई कीवर्ड के बाद यहाँ पे हर एम्प्लॉई कीवर्ड के बाद डॉट यूज़ किया है और उसके बाद में जो क्लास एट्रीब्यूट है वो यूज़ किया गया है. ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज प्रिंट एफ एम्प्लॉई नेम एम्प्लॉई डॉट अंडरस्कोर नेम underscore then module basis and dict. Okay, so how it will be reacted, how it will print the message on the console, we will see in the output. See here, this is the when the above code is executed, it produces the following result. So employee dot underscore doc underscore common base क्लास फॉर ऑल एम्प्लॉई. तो जो सबसे पहला जो हमने मैसेज दिया है दैट विल बी प्रिंटेड विद द हेल्प ऑफ दैट फर्स्ट वन. सो दिस इज़ द डॉक्यूमेंटेशन. तो जो भी ओवरऑल इंफॉर्मेशन है आपके क्लास एम्प्लॉय की दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट. नेक्स्ट इज़ द एम्प्लॉय नेम. सो क्लास का जो नाम है दैट इज़ द एम्प्लॉय दैट विल बी प्रिंटेड. तो यहाँ पे देखिए आपका एम्प्लॉय नेम जो है दैट इज़ द क्लास नेम. सो दैट विल बी प्रिंटेड विद द नेम. ओके, नेक्स्ट इज़ द मॉड्यूल. ओके, सो मॉड्यूल इज़ अ मेन मॉड्यूल. ओके, तो यहाँ पर हमारा जो है वो मेन ही मॉड्यूल है. सो दैट इज़ वाई हियर द मेन विल बी प्रिंटेड. देन बेसिस एम्प्लॉई अंडरस्कोर बेसिस अंडरस्कोर इट विल गिव्स द parenthesis. Then employee dictionaries. Okay, so module main display count, whatever the informations about the different functions directories present in your class definition that will be printed with the help of the dict employee. Okay, so this is all about the different built-in class attributes. So underscore dict underscore underscore doc underscore underscore name underscore underscore module underscore and underscore basis underscore. So these are the different 5 built-in class attributes. According to their use you can use in the Python programming language. So ये जो है ये आपको लर्न करना ज़रूरी है. सी दिस ऑल दिस कीवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट और उसका जो यूज़ है वो आप ध्यान में रखिए. मे बी शायद से आपके MCQs में ये क्वेश्चंस अराइज हो सकता है. ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एज पर द एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट इज़ द डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट. destroying object means the whatever the memory जो भी आपकी memory create होती है आपके objects के लिए that will be free out with the help of the destroying the object. See, हमने जावा प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट जब भी पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि दैट इज़ अ गार्बेज कलेक्शन इज़ देयर. सो गार्बेज कलेक्शन ये ऑटोमेटिकली पीरियोडिकली परफॉर्म होता है. तो पीरियोडिकली कैसे होता है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम पीरियोडिकली सिस्टम डॉट जी सी दैट इज जी सी मीन्स गार्बेज कलेक्टर जो मेथड थी दैट विल पीरियोडिकली एग्जीक्यूटेड एंड दिस मेथड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फ्री आउट द वेस्टेज मेमोरी. तो जो भी आपकी वेस्टेज मेमोरी रहती है उसको फ्री करने की जो प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द गार्बेज कलेक्शन. Okay, so in Java also automatic garbage collection is possible. Okay, so system.gc that is garbage collector method is executed periodically for that and free out the wastage memory. और अगर आपके कुछ फाइल्स या कोई भी अगर डॉक्यूमेंट अगर फ्री आउट नहीं होता है with the help of the gc method, then that the finalize method is basically used for that. Okay, so this concept is basically studied in the Java programming language.
इन पाइथन प्रोग्रामिंग ऑल्सो जब भी आपके क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की बात आती है तो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं और उसके रेफरेंसेस कभी भी किसी भी दूसरे अगर ऑब्जेक्ट्स को असाइन करता है तो दे विल पॉइंट आउट टू दैट ओनली वन लोकेशन नॉट अदर। तो जो भी हमारा प्रीवियस जो लोकेशन होता है दैट विल बी वेस्टेज, अननेसेसरी फ्लोटिंग होता है, तो उसको फ्री आउट करने का काम भी आपका पाइथन भी करता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गार्बेज। तो नेसेसरी द प्रोसेस जब भी आपकी वेस्टेज मेमोरी का फ्री करने का जो भी प्रोसेस होगा दैट विल कॉल्ड एज द गार्बेज कलेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट्स इन केस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So here destroying objects or a garbage collection. So Python deletes unneeded objects, that is built-in types or class instances, automatically to free the memory space. The process by which Python periodically reclaims blocks of memory that no longer are in use is termed garbage collection. Okay, so I again repeat that the process by which Python periodically reclaims blocks of memory that no longer are in use is termed garbage collection. तो जो भी आपकी वेस्टेज या ब्लॉक ऑफ मेमोरी है उसको फ्री आउट करने की जो भी प्रोसेस आपकी पीरियोडिकली पाइथन वर्कआउट करता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द गार्बेज कलेक्शन. ओके, नेक्स्ट द पाइथन गार्बेज कलेक्टर runs during program execution and is triggered when an object's reference count reaches 0. Okay, so Python garbage collector runs during program execution and it triggers when an object reference count reaches 0. ओके, तो उसके लिए यहाँ पर भी एक समथिंग कंडीशन है, तब भी गार्बेज कलेक्टर तभी पाइथन का एग्जीक्यूट होगा, रन टाइम एग्जीक्यूशन होगा जब आपके ऑब्जेक्ट रेफरेंस काउंट रीचेस टू 0, जब भी उसकी वैल्यू 0 पे आएगी. एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस काउंट चेंजेस एज द नंबर ऑफ एलाइजेस दैट पॉइंट टू इट changes. Okay, an object reference count increases when it is assigned a new name or a place in a container, that is list, tuple or dictionaries. Okay, the object reference count decreases when it's deleted with a del. Okay, so its reference is reassigned or its reference goes out of the scope. When an object reference count reaches 0, Python collect it ऑटोमेटिकली. ओके, तो उसके लिए समथिंग कंडीशंस ऐसे ही बोला जाता है कि कंडीशंस ही है. तो यहाँ पर ये जो है दैट इज़ जब भी आप ये लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी जब भी क्रिएट करते हो द ऑब्जेक्ट रेफरेंस काउंट डिक्रीजेज व्हेन इट इज डिलीटेड विद द टेल. तो डिलीट होगा तब उसका जो काउंट है वो डिक्रीज होगा, लेकिन आप जब क्रिएट करते हो दैट विल बी इंक्रीज. सो इट्स रेफरेंस इज रीअसाइन और इट्स रेफरेंस गोज आउट ऑफ द स्कोप. सो व्हेन एन object reference count reaches 0, so Python collect it automatically. That is the example. So यहाँ पर garbage collection तभी होगा automatically, periodically Python तभी create करेगा जब आपके object reference count की value 0 होगी. That time will done it automatically. Next is see here. So a equal to 40, so create object 40. तो हमने यहाँ पे एक object को create किया है. ओके, देन बी इक्वल टू ए, तो एक जो बी है उसको मैंने असाइन किया ए का रेफरेंस. ओके, सो ए इक्वल टू 40 तो हो गया, लेकिन बी इक्वल टू मैंने ए दिया है. ओके, सो ए का रेफरेंस किसको गया अभी, बी को. सो नाउ बी विल बी ऑल्सो पॉइंटेड टू दिस. ओके, सो इंक्रीज रेफरेंस काउंट ऑफ 40, तो यहाँ पर भी आपका एक से बढ़ गया. देन सी इक्वल टू बी, इंक्रीज रेफरेंस काउंट ऑफ 40, अगेन इट विल बी इंक्रीजेस क्योंकि मैंने सी को भी बी की वैल्यू assign key because it is a variable. Next, del a, so decrease reference count of 40. b equal to 100, decrease reference count of 40 क्योंकि मैंने b को a को तो डिलीट किया, b को जो मैंने पहले a असाइन किया था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a असाइन किया था, लेकिन अभी b को मैंने 100 असाइन किया, तो जो b इक्वल टू a है वो रेफरेंस दैट विल बी डिक्रीज. सो डिक्रीज रेफरेंस काउंट ऑफ 40 एंड c ऑफ 0 इक्वल टू -1, तो यहाँ पर जो वैल्यू थी दैट विल बी चेंज. सो डिक्रीज रेफरेंस काउंट ऑफ 40 हियर. सो व्हेन नॉर्मली वी विल नॉट नोटिस व्हेन द गार्बेज कलेक्टर डिस्ट्रॉयड एंड orphaned instant and reclaim its space, but a class can implement the special methods del called a constructor.
ओके जैसे इनिट कंस्ट्रक्टर है वैसे ही आपका अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर भी कंस्ट्रक्टर इसमें है, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीटिंग और डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट्स that is invoked when the instance is about to be destroyed. This method might be used to clean up any non-memory resources used by the instance. So here एक बेसिकली ध्यान में रख लीजिए आप लोग कि init जो है अंडरस्कोर init दैट इज़ फॉर इंस्टेंशिएशन इनिशियलाइजेशन और del जो है दैट इज़ फॉर द destroying. Okay, so this is called as the constructor and this is called as the destructor here. ओके बेसिकली डिस्ट्रक्टर इज़ नॉट प्रेजेंट इन जावा, यहाँ पर आपको दिया है उसका बेसिकली जो मेथड है वो दिया है दैट इज़ अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर फंक्शन. Next, this is the del constructor prints the class name of an instance that is about to be destroyed here. Okay, so see here example class point. तो यहाँ पे हमारा क्लास का नाम है point. ओके तो पॉइंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया. देन डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0. ओके सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू वाई. सो दिस इज कॉल्ड एज द इनिशियलाइजर. ओके तो इनिशियलाइजर और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्टर हियर. तो हमने यहाँ पर एक्स इक्वल टू एक्स सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स और सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू वाई, तो दोनों 0 0 आपके इनिशियलाइज हो गए. नेक्स्ट डेफ जो आपका फंक्शन है दैट इज अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर दैट इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रक्टर हियर. ओके सो क्लास अंडरस्कोर नेम इक्वल टू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर डॉट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर विच विल प्रिंट द क्लास नेम डिस्ट्रॉयड. ओके तो यहाँ पर जो आपका डिलीट जो कंस्ट्रक्टर है डैट विल डिस्ट्रॉय योर whatever the objects created. Okay then ptr equal to point. तो point constructor हमने यहाँ पे दिया already initialize with 0 0. okay so आपका x और y initialize होगा with 0 0. next ptr2 equal to ptr1. तो यहाँ पे हमने initialize किया है so object reference will be increased by 1 here. then ptr3 equal to ptr1 again so increase by 2. okay so 1 plus 1 getting 2. then print id ptr1 id ptr2 id ptr3 prints the ids of the object. तो यहाँ पे देखिए आपका जो आउटपुट है विच विल प्रिंट द ids मीन्स एड्रेसेस जो है रेफरेंसेस के वो आपके यहाँ पे प्रिंट हो गए. ओके सो दैट विल बी इक्वल. ओके देन del ptr1 del ptr2 एंड del ptr3. तो यहाँ पर मैंने तीनों के तीनों डिस्ट्रॉय किए यहाँ पर सो दैट विल प्रिंट द मैसेज डिस्ट्रॉय. सो पॉइंट डिस्ट्रॉयड. ओके जो भी आपका क्लास का नाम है दैट विल बी प्रिंटेड एंड it will be destroyed. Okay so ideally you should define your class in a separate file, then you should import them in your main program file using import statement. तो ये तो ठीक है बट यहाँ पर हमने जो क्रिएट किया ओके सो यहाँ पे हमने पहले इनिशियलाइज किया फिर ptr1 को मैंने ptr2 को इनिशियलाइज किया ptr1 को मैंने ptr3. तो यहाँ पे जो हमने रेफरेंसेस क्रिएट किए दैट विल बी इंक्रीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. बट बाद में मैंने जैसे ही डेल कीवर्ड यूज़ किया तो डैट विल डिक्रीज द काउंट. तो जैसे ही वो रिचेस होगा 0 पे सो दैट मेथड डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल एंड फ्री आउट द वेस्टेज मेमोरी विच इज़ ऑक्युपाइड बाय दिस all objects which will occupy for the x and y. Okay so this is all about the del constructors basically present in the Python programming language. Okay so आप यहाँ पे इनिट मेथड जो है वो यूज़ करके इनिशियलाइजेशन मीन्स इंस्टेंशिएशंस क्रिएट कर सकते हो एंड बाय यूजिंग अंडरस्कोर डेल अंडरस्कोर विच विल बी कॉल्ड एज अ डिस्ट्रक्टर हियर विच विल यूज टू डिस्ट्रॉय the objects or unnecessary free out the memory. That process is called as the garbage collection process in case of Python programming language. Okay so this is all about the today's lecture. In the next lecture we will started our new topic which is included in the 5th unit and which is very important as per the examinations point of view. Okay so till then thank you so much all of you. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.